नमस्कार, मैं राघव टीएनसी लाइव से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा बेहद खास प्रोग्राम जिसमें आज हम चर्चा करेंगे माँ आनंद मधु के संन्यास बर्थडे की और माला के साथ में किस प्रकार से उनका दिन कल यानी 12 फरवरी 2022 को किस तरह से उनका पूरा दिन गया, इसको लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं माँ आनंद मधु का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है माँ आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू राघव स्वामी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें प्रोग्राम की शुरुआत में, क्योंकि कल माँ योग लक्ष्मी जी का बर्थडे था, तो मुझे लगता है कि उन्हें हमें सबसे पहले भावभीनी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और पिछले दिनों में हमने 2 दिन पहले 9 फरवरी को हमने उनकी याद में उनको लेकर के प्रोग्राम किया था। और इस बार इस थर्सडे को, आने वाले थर्सडे को हम लोग फिर से माँ के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस बार मैं सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ में स्वामी चैतन्य कीर्ति रहेंगे और साथ में हमारे साथ में रहेंगी माँ धर्म ज्योति, और इसके अलावा स्वामी विट्ठल हमारे साथ में रहेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर और रोचक प्रोग्राम होने वाला है। चलिए हम आते हैं और सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं माँ आनंद मधु की कल आपका संन्यास बर्थडे था। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका संन्यास 12 फरवरी को कब और कौन से ईयर में हुआ था? जी कैन आई स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी यस, एंड यस, यस, इंग्लिश? यस, हाँ, डेफिनेटली। ओके, यस, थैंक यू सो मच। सो पहले तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरा माय संन्यास बर्थडे इट हैपेंड इन ईयर 2000। 2000 साल में मैंने संन्यास लिया था और कल उसे 21 साल पूरे हो गए। तो इसलिए मुझे बहुत मन था कि मैं कम्यून में जाऊं, मैं समाधि में जाऊं और माला पहन के जाऊं। ऑफ कोर्स ओशो की समाधि है, ओशो का कम्यून है, तो ओशो ने दी है ये माला, तो बनता है बिल्कुल। सो मैं गई थी अंदर, माला पहन के गई थी जी। जी, तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कल का जो आपका दिन आश्रम में बीता, क्योंकि खास तौर पे अपने गुरु की समाधि के पास में या उनके ऊर्जा क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वैसे ही प्रफुल्लित हो उठते हैं। तो जी। ऐसे में आपका जो कल का दिन था, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके मन में क्या उत्साह था, क्या फीलिंग्स थी? सुबह आप उठे होंगे और आपने सोचा होगा कि आज मैं जो है आश्रम में प्रवेश करूँगी। तो अरे बहुत आज बहुत कैसे? दिनों बाद, हाँ, बहुत दिनों बाद जा रही थी अंदर और वेलकम सेंटर में गए हम लोग। मेरे साथ 2 और माँ भी थी जो कि पहली बार पूना कम्यून आई थी और हमारी बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि माँ आप हमें गाइड करना, हमें पूना आश्रम देखना है। तो वो आउट ऑफ पूना से थी, पूना की नहीं थी वो, और उन्होंने कहा माँ हमने इंक्वायरी की तो अंदर इतने सारे खर्चे हैं। उन्होंने कहा गेट पास उसका 970 रुपया, मरून रोब उसके लिए गैलेरिया में से ले लो 500 जो भी 700 तो काफी सारा खर्चा। तो मैंने कहा माँ आप चिंता मत करना, मेरे पास रोब्स है, मैं ले आऊंगी। तो मैं वो सब लेके मैं गई थी कम्यून, तो उनसे मिली, मैंने उनको रोब्स दिए और मैंने कहा कि आज मेरा संन्यास बर्थडे है तो मैं तो साइलेंस में रहूंगी पूरा दिन अंदर और आप एंजॉय कीजिए। और वहाँ पर वेलकम सेंटर में देवेंद्र स्वामी मिले और बहुत अच्छे से पेश आए। फिर मैंने जाके साइलेंस का बैच जो होता है वो मेरे पास नहीं था, तो मुझे गेट पास मिला। फिर फूड वाउचर लिया मैंने 500 रुपीज़ का, और मुझे लगा उसी में वो साइलेंस का बैच के जो पैसे हैं उसी में से कट जाएंगे। तो मैं रोड क्रॉस करके द अदर साइड जहाँ गैलेरिया है वहाँ पे गई, मॉन का जो साइलेंस का बैच है वो लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है 15 रुपए। तो मैंने हाँ भैया कैश ले लो या ये फूड वाउचर है उसमें से कट कर दो। कहा नहीं नहीं ये नहीं चलता, इसके लिए आपको 200 रुपए का अलग से गैलेरिया का पास लाना होगा। मैंने कहा भाई
देखिए आज मेरा संन्यास बर्थडे, मैं कई दिनों बाद आई हूँ कम्यून में, और ये थोड़ा इजी रखें आप, थोड़ा सहज रखें, तो हम लोगों को इतनी असुविधा नहीं हो, पैसे ले लो या फूड पास में से काट लो। तो उन्होंने नहीं 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 ऐसे नहीं, आपको वहीं जाना होगा वापस से वेलकम सेंटर। हमने कहा ठीक है, तो चली गई मैं वेलकम सेंटर। उनको कहा मैंने, जो वहाँ पे एक थे सन्यासी, प्यारे सन्यासी, तो उन्होंने उन्होंने मुझे वो जो गैलेरिया का अलग से जो वाउचर होता है, तो उन्होंने मुझे दिया, जिसमें से कि 15 रुपए काट के मैंने उनको दे दिए। गैलेरिया से मौन का बैच ले लिया और मरून रोब पहन के फिर देन आई वाज रेडी टू एंटर इनसाइड। अंदर जैसे ही जाते हैं तो बिल्कुल दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। और क्या कहें, आशीर्वाद बरसता है बहुत बहुत। जी, बिल्कुल। मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जब आप एंटर किया आपने, तो मेरे पास में कुछ पिक्चर्स हैं आपकी, वो भी दिखाना चाहूँगा, और जी उसके पश्चात हमारे पास में कुछ वीडियोज़ भी हैं, जो भी हम जी। साझा या शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी मैरून रॉब की ये वाली पिक्चर, जिसमें आप नाचते हुए, डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कैसे दिन में ये यहाँ पर बैठे हुए ध्यान में, प्यार में, प्रेम में डूबे हुए आप नज़र आ रहे हैं, खुशी से भरे हुए आप कल वहाँ पर आपने एंटर किया। तो क्या-क्या जी देखा शुरुआत में ही आपने? मैं उस बारे में चाहूँगा कि आप यहाँ पर जी। तो मैं जैसे ही अंदर गई तो पहले तो ऑफ कोर्स पोडियम की तरफ, बुद्धा हॉल की तरफ, पुराना बुद्धा हॉल कहते हैं इसे, लेकिन मेरे लिए वही बुद्धा हॉल है जहाँ ओशो ने बैठ के प्रवचन दिए इतने साल। तो मैं बस जैसे ही आश्रम कम्यून जाती हूँ तो पहले पोडियम जाके माथा टेक देती हूँ, और बड़ा आनंद आता है। वहां पे जो बैम्बू के बहुत सुंदर से पेड़ है दोनों साइड में, झूलते हैं, पत्ते गिर रहे हैं, पंछी चहक रहे हैं, किसी और संगीत की जरूरत नहीं पड़ती, आप इतने खुश हो जाते हो, मगन हो जाते हो वो सब देख के, और कुछ नहीं करना होता। वो बुद्ध क्षेत्र ही इतना कुछ कर देता है आप पे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट बैठ जाओ, देखो, सुनो, अपने आप आनंदित होने लगते हैं हम। तो और मैंने साइलेंस का बैच रखा था पहन, तो मुझे तो किसी से जुड़ना नहीं था, मुझे तो बस अपने भीतर आनंद से रहना था वहां पर। तो कुछ देर बाद वहां पे प्लाजा में जो है वहां पर नो डिमेंशन ध्यान हो रहा था। मैं तो पोडियम और बुद्धा हॉल में ही थी, और भले प्लाजा में कर रहे थे, लेकिन मैं पुराने वाले बुद्धा हॉल में ही, बुद्धा ग्रूव जिसे कहते हैं, I was dancing over there. I was listening the music which was coming from Plaza, no dimension meditation ka, but I was dancing in podium. So yes, I was enjoying just being there. उसके बाद कोई माँ वहां से गई तो मैंने उनको कहा कि प्लीज आप मेरा एक फोटो खींच दे, तो डर गई वो। उन्होंने कहा कि अरे कोई देख लेगा। तो मैंने कहा क्या होगा, देख लेगा तो। और मैंने माला बतौर इसी तरह से पहन रखी थी। सबने देखा, साधना माँ थी, देवेंद्र स्वामी थे, ध्यानेश स्वामी थे, मुकेश स्वामी जी ने देखा, योग प्रताप जी थे, वो, और वो बेला करके कोई है उनके साथ, प्रतिभा माँ है, अच्छी, काफी अच्छी है। मैं अंदर जाने के बाद में समाधि के यहाँ पे अंदर से गार्डन से मैंने चक्कर लगाया, द गार्डन ऑफ द बिलवड। तो पेड़ों को देखा, महसूस किया, वो सब हो रहा था। मैं शाम चाय वगैरह पी के मैं आ रही थी टूवर्ड्स पोडियम, तो मुझे साधना माँ की आवाज सुनाई दी। वो किसी से बात कर रही थी, और वो बहुत जोर से बात कर रही थी। मतलब वो, जैसे हम पास में नजदीक में है तो हमें इतनी जोर से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जोर से बात कर रही थी, कह रही थी, हालांकि सभी ने माला देख ली थी मेरी, कि मैं माला पहन के सब जगह जा रही हूँ, घूम रही हूँ। मुझे कुछ अलग नहीं लगा, ये ओशो का क्षेत्र है। तो वो साधना माँ बहुत जोर से कह रही थी, अरे यहाँ पे तो अभी उत्सव वगैरह भूल जाओ आप,
जो जिससे बात कर रही थी, आप उत्सव वगैरह तो भूल जाओ, आप जस्ट फॉरगेट अबाउट सेलिब्रेशंस एंड द वे इट यूज्ड टू बी इन गुड ओल्ड टाइम्स. So just forget about all that. It's not going to happen. It's not going to happen. And anyway, the time is different now. So she was, Sadhna Ma was saying this so very loudly. I knew that, of course, she's telling that to me, but just because she cannot directly connect with me and tell me that, hey, whatever. So she had somebody else to speak to. I didn't paid any attention because I was there inside just to, be with my own self and with Osho. So I just ignored it and I walked towards podium again. Um, yes, till 4:30 it was beautiful. I had silent sitting in samadhi also. uh, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी. आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट समाधि. कि जैसे ही मैं अंदर गई, एज आई एंटर्ड इन समाधि, so as we enter inside samadhi, there is the first thing what we get to see is the waterfall behind the glasses, behind the big blue glasses. There is a big waterfall, and about that particular waterfall and about the garden, lot many things have spoken up till now on so many interviews, that it is so very particular, and Osho wanted it in such particular way, and so much material was brought not only from India but from outside also. So it is that precious one. So what you get to see is, once you enter inside samadhi, you get to see the waterfall, but the water is not flowing, it's all dried up. The stones, the big stones, they're all dried up, and the few little creepers which are supposed to be there, they're all dry. So that's the thing which you get to see. Yes, there is garden around, it's beautiful green, they water it and everything, but this is what I got to see. Okay, samadhi, the first view as I enter in. Then we sat there. I could do half an hour silent sitting, because the morning time, the 1 hour silent sitting, I missed. I didn't want it to miss, but the way they make the whole program, the day program, wherein a newcomer or a new person who is coming to visit commune, so that person is allowed at 9 o'clock. Okay. So 9 o'clock, once you enter in, you go to welcome center, you make your card, then you have to find a locker, because you cannot carry the whole stuff on your back the whole day if you're going to spend there the whole day. You have maroon robe, you have white robe, you have your shawl, socks, and it's cold. So you carry a lot of stuff. So the first thing is you go to you go and take the locker, you buy the lock, or else you have to remember to get the lock from your home. So there are so many hurried processes wherein wow, I'm in. It's like, okay, no, wait, I have to do this. Oh, I have to go and catch that time, and I need to do all this series of things. And then after an hour or so, or 1.5 hours or so, then I'll be like, now I'm in. Okay, so um, all that happened. Sorry, I missed my point. So the thing is, when there are so less people inside the commune now, okay, hardly 16 people stay inside. They have been staying for so many years. Okay, so these 16 people, and altogether how many people were inside? There were 33 people. Okay, because I was at White Rope, so I counted all the people, how many people are there. So for such a small number of people, make it little simple, keep it little simple, so that people can come, they can just be, they can relax, they don't have to be in haste, or god, what if I do something wrong and I'll miss something. Why one has to enter in with such kind of feeling state. So this request, to make it little simple for the people who come new. There were two females who came for the first time, but
they could hardly stay inside for 2-3 hours, and they stepped out of the commune and they didn't came back to the commune that day. Actually, they were the one who came from outside Pune just to visit the commune. But they said, Ma, it was too many rules, too many rules and regulations. So uh, the Ma said, we just saw the samadhi from outside, from the glasses, from the garden, and we roamed around and we left. So it's like, make it little simple for new people. Why there has to be such rigid rules, and people have to be so much fearful about what if I go wrong, and things like that. Okay. So yes, till 4:30, things were fine. I went for chai. I took few videos. What I saw was the podium. There are many cracks, big cracks. Okay, it's a marble podium where Osho sat for so many years and he gave discourses from that very podium. Huh? So there are many big cracks. The chair where Osho used to sit, under that there are trees trying to grow up. Okay, so it's like, if they're not maintaining the podium, they just want it to let it break. Yeah, so it will break naturally. It's natural, it breaks, but there are ways to take care of it. And it has been taken care for so many years, then why not now? Why not now? So I took a few videos of podium, of the whole Buddha hall when no dimension meditation was happening. I took the video of from outside the Samadhi gate, the glass where you can see the Osho car standing, and the outside area. So I took video of that also, plus the जी, Basho swimming pool. हाँ जी. यस। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आगे बढ़ने से पहले ये जो कुछ वीडियोज़ हैं, हम बारी-बारी से सबको हाँ, साझा yes, करवाएँ। yes, 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 जी। please. ये वो स्थान है जहाँ पर हम समाधि में एंटर करते हैं। ये इससे पहले का जो ऊर्जा जो क्षेत्र है, बुद्धा फील्ड, सामने हमारे रोल्स रॉयस कार जो कि हमारे भगवान श्री रजनीश जिस पे बैठ करके यहाँ से बुद्धा हॉल तक जाया करते थे। और ये चंद मिनट की ही दूरी पर है, और हर रोज़ यही एक कहा जा सकता है कि तरीका फ़ॉलो किया जाता था उन दिनों में, जब वो शरीर में थे और जो है जाया करते थे। तब से लेकर के अब तक ये रोल्स-रॉयस जब से वो गए हैं, तो यहाँ पर खड़ी हुई है। इसको साफ़ किया जाता है और इसको काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ, मैं इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है इस कार को, तो इसके लेकर के मेरी यही बात है। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिनको मेंटेन नहीं किया गया, तो कुछ और तस्वीरें या वीडियोज़ आप कह सकते हैं कि हम आपको अभी और दिखाने जा रहे हैं। ये कहाँ का वीडियो है माँ? मैं चाहूँगा कि अच्छा, ये पोडियम का वीडियो है शायद। जी, म्यूट है. ओके. जी, हाँ, तो ये बुद्धा ग्रूव कहते हैं उसे, लेकिन ये हमारा बुद्धा हॉल है जिसमें बैठ के ओशो ने कितने सारे प्रवचन दिए. यहीं पे काफ़ी सारे म्यूज़िक कॉन्सर्ट होते थे, लाइव संन्यास म्यूज़िक होता था, और
बहुत 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 सुंदर समय देखा है इन सारे पेड़ों ने। उन्होंने तो देखा है ओशो को, साक्षात ओशो को देखा है, इन सारे पेड़ों ने देखा है। ये बहुत मौलिक है, ये जगह बहुत मौलिक जगह है। यहाँ से एंटर होते हैं हम, मतलब पहले यहाँ से एंटर होते थे जब बुद्धा हॉल के ऊपर वहाँ जो नेट हुआ करती थी, तो यहाँ से एंटर होते थे जो पहले वाला। और पोडियम के दोनों साइड्स में बहुत सुंदर बैम्बू के पेड़ हैं, झूलते रहते हैं पूरे दिन। और जहाँ से मैं ये वीडियो ले रही हूँ वहाँ पीछे भी बहुत बहुत घना बैम्बू का समूह है, मेरे पीछे भी, जहाँ से मैं ये वीडियो ले रही थी। सो यस। आगे चलते हैं, एक और वीडियो है हमारे पास में, वो भी हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे पहले। ये बाशु स्विमिंग पूल है। ये थोड़ा ऐसे हो सकता है क्या, टर्न हो सकता है थोड़ा? नहीं, ये इस तरह से सीधा नहीं हो सकता, लेकिन हम एक और जो है वीडियो है पहले वो दिखाना चाहेंगे। हाँ जी। स्विमिंग पूल है, और लेकिन पूल का पानी नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उसके ऊपर पूरी 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 तरह से जो पत्ते गिरते हैं ऊपर से, उसकी मोटी सी परत जमी है वहां पर। तो पानी ऐसा लगता नहीं फोटो में कि यहाँ पे पूल है करके, जबकि बहुत बड़ा ये वाला। जी, ये हिस्सा जबकि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि पत्तों से पूरा का पूरा ढका हुआ है। और मैं वीडियो इस पूरा पूरा जी, वीडियो है इसका, मतलब पूरा पुल दिखता है। जी, मैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगा। जब मैंने विज़िट किया था सितंबर में, तब वहाँ पर मेरी बात हुई थी, जब माँ अमृत साधना मुझे लेकर के गई थी, पूरा बाशु दिखाया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आश्रम है वो मुझे दिखाया गया। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि हालत बहुत ख़राब है स्विमिंग पूल की, और मैंने उनको बोला कि भई ये क्या मेंटेन नहीं हुआ है अभी तक? तो उन्होंने बोला कि ये हर हफ्ते मेंटेन होता है। चूँकि आज शायद उस दिन शनिवार था या फिर इतवार था उस दिन। उन्होंने मुझे बोला कि ये सोमवार के दिन जो है पूरा का पूरा क्लीन किया जाता है। तो इसको देख कर के लगता नहीं है नहीं कि लेकिन तब से अब तक किसी ने ले, भी इसको हाथ भी लगाया, या तो कर्मचारी नहीं मिले हैं या कोई कर्मचारी नहीं आया इसको साफ करने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है इसकी हालत को देख कर के, क्योंकि सितंबर से अब तक की बात करें तो कितने ज़्यादा पत्ते अब तक गिर चुके होंगे, जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। जी, माँ कुछ कहना चाहते हैं आप शायद? हाँ, वो कह रहे थे कि हम लोग मंडे को करते, ऐसे आपको कहा गया, लेकिन जबकि पूरे हफ्ते में इट्स ओनली सैटरडे संडे, द वीकेंड्स वेयर मोर पीपल कम, मोर इन द सेंस 30-33 yesterday. So what's the point in cleaning the swimming pool on Monday, where from Monday to Friday there is hardly, I don't know whether how many people come, but when there are hardly people inside the commune, what's the point in cleaning in that time and not on weekend? I mean, it's strange. जी, Anyway. पर यहाँ पर लगता नहीं है, अगर हर हफ्ते में वहाँ पर सफाई हो, तो मुझे लगता है कि जी। 1 हफ्ते में सफाई होने के बाद में पूरा हफ्ता इस्तेमाल भी किया जाए, तो पूल का हाँ। पानी थोड़ा-सा गंदा हो सकता है, जिसको बदलने की आवश्यकता हो। लेकिन ऐसे जो है पत्तों का ढेर लगना, वहाँ जो मैंने देखा काई जमी हुई थी, तो बहुत दयनीय अवस्था में मैंने उस स्विमिंग पूल को देखा था। तो बहरहाल पहले अब ये पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं आपसे। जी।
जी, तो हमने अभी देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से कितनी सारी चीज़ों का क्या रख-रखाव चल रहा है। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने संन्यास, जब समाधि की हम बात करें, समाधि में आप पहुँचे और समाधि के बाद में वहाँ पर आपने क्या आपके मन में था? क्या आप वहाँ कैसे आपने एन्जॉय किया? तो थोड़ा-सा हमें वो बताएँ और उसके बाद में फिर हम शाम की तरफ आते हैं कि शाम के इंसिडेंट आपके साथ में हुए। जी, जी। तो ऐसा हुआ कि हाँ, समाधि में मुझे बस आधे घंटे की आई कुड जस्ट सिट फॉर हाफ एन आवर इन समाधि because the morning time was 7:30 to 8:30, which was they made it impossible for, I mean, for anybody who comes on that very day. So it is impossible for that person to sit in samadhi for that morning 1 hour. But then I could sit for the later half an hour, which was later at 2 o'clock, 2:30 something. So I could sit for that. क्या कहते हैं, for that particular time, half an hour inside the samadhi. Samadhi is like you just don't want to get out of that place. आपको तो वहां से जबरदस्ती जाना पड़ता है बाहर, तो ही आप जाते हो, वरना कौन जाना चाहेगा समाधि से बाहर। तो yes, so after half an hour I left. I came back to podium. I was sharing all these videos with my close friends who have been in this Save Osho Legacy movement. So मैंने शेयर किए ये वीडियोस, मैं कर रही थी दिन भर में कि देखो यहाँ पोडियम पे क्रैक्स है, देखो यहाँ पर ये हो रहा है, या यू नो सो ये हमारी जगह है, हमारे सदगुरु की जगह है, हमारे ओशो की जगह है। अगर इसका रख रखाव ठीक से नहीं होगा, इफ दैट particularly the podium and the basho, then we can come inside and we can take care of the space. We can do the cleaning of podium as it used to be, and the basho pool also. So जी, तो उसके बाद then I stayed there for till say uh, White Robe. 4:30 I went to have my chai and khakra because the food was too costly. I was carrying a little tiffin with me because I was told by somebody from inside. I won't name her name because she is really kind lady. So I don't know whether I should name her name, because else afterward I do not want that she should go in some trouble, because she is inside. Okay, so I got to know that she said, "Okay, Ma, we understand that the food is very costly over here, and yes, people are facing problem, and we understand that this is the issue, the money thing, the entry fees, and then the food charges. So what you can do is you can bring your own food, a, a little tiffin kind of thing, and you sit aside and you eat, so that nobody should complain, so that nobody should complain, huh? कि ये बाहर से, that she is bringing the outside food and she is eating here, why not we can also do the same. Okay, so nobody should complain, so you do it secretly, sit at one corner and do it. So that was very nice and lovely of her, that I got some food for me. But then by 4:30, and anyway, when you are inside, you are so much full of joy and happiness, you don't feel like stuffing your stomach with food. You're already high. So I was like, no, I do not want to go for much food and stuff myself. So I had this little food. At 4:30 I went to near Basho pool area to have my chai and some khakras. Okay, so I was sitting there. Beforehand I could see that everybody was coming at 4:30 to have chai.
There was Ganesh Swami, there was Mukesh Swami, there was Pratibha Ma, there was one more Ma who stays there. I do not know her name. Yeah, so Yog Pratap, everybody was around, and people were watching me little like uh, uh, there was a weird look in there, like how come she can wear the mala? It was something like that because nobody was wearing mala. Not a single person was wearing mala. Okay, only one person was wearing the mala, and that too, he had to put it inside his robe. I could see it from here. Okay, he is the one who is wearing mala, but he has to put it inside his robe. He should not show it out. Okay, so um, and because I had my mala out, so there was strange look towards me. But luckily, thank you to everybody, nobody bothered me at that time. They bothered me later on a lot, but yes, at that time, nobody bothered me. Yes, there was a beautiful lady who came and spoke to me, who stays inside. So she came and spoke to me. She said, because she couldn't see my silence badge, so she came and spoke to me. She asked me where you have came from. So I said, yes, of course, I stay in Pune and I have came from 16 kilometers drive, with all my stuff on my back. So she was like, aha, wow, nice, good. And then she saw my silence badge and she was like, oh, sorry, uh, I, 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 I broke your silence. I'm sorry. So she could understand, she could respect this. Yes. So by 4:35, 5:30, I was out from there. Everybody saw me. I was like, okay. And then there was a discussion among us, among our friends, like, okay, now what? So friends were saying, good. Now that now you go to for the white robe and let's see what they do what they do over there. I'm sure that they will come and speak something to you over there. So I was like, okay, let's see what happens. So I took shower, I became fresh, and I went to Pyramid Buddha Hall, New Buddha Hall, and I was standing little away. Uh, Swami Yog Pratap and Swami Dhyanesh were there. Um uh, there is a different setup when there is a crowd. They don't put there is a big table they put there, okay, in between where they check everybody, scan or something, whatever the COVID thing, or whether you are carrying any metal thing. So it's general checkup they do over there. So there was that particular table kept over there. So there was Swami Yog Pratap and the other side was Dhyanesh Swami. Now whoever has been to Osho, that pyramid Buddha Hall, they know. Actually, I was trying to search this particular picture a lot, where there is a pyramid Buddha Hall, and to the both the sides there is sort of lake, lots of water, and it's a little deep, like say 3 feet, 4 feet, maybe, or maybe more or less. So there is lots of water to both the side. Okay. Um, so here I am standing with my white robe, with my mala. Okay, I tried to cover my mala a little bit because I thought that okay, till 5:30 or 6 o'clock. Now that these people have not bothered me about wearing my mala outside. Okay, good. Thank you very much. Now I just keep the respect a little bit, and I just pulled a shawl up so that the mala is seen a little bit here and there, so they can ignore, and I can also say, okay, you haven't seen anything funny. So this Yog Pratap Swami, he calls me. Yog Pratap is one of the trustee. He's an old guy and who keeps on talking on Facebook. Lots of his posts are, there is no samadhi. There is no samadhi inside. So don't claim that there is samadhi. This is the
mentality of these people who are staying inside Yog Pratap. So Swami Yog Pratap, sorry. So he called me. Okay, I said me. He said yes, come. So I go to speak to him. Then he says, Mala. I said, Swamiji, it's my sannyas birthday today. He said, bullshit, bullshit. There is nothing like sannyas birthday, blah, blah, blah. And he was so very angry and so very aggressive on me. Okay. And I was trying to tell him, Swamiji, look, I'm in silence and it's just mala. Whether I put it in, there was Danish Swami to the other side. He was saying, why you are exhibiting your mala so much the whole day? I said, Swamiji, whether I put my mala outside the robe or whether I put inside the robe, what does it makes difference anyway? So Danish Swamiji started talking about Osho's quotes, where Osho has said that no mala and whatever. So meantime, Yog Pratap is trying to come at me. Actually, he walked over me so furiously. I'm stepping back. I stepped 4 steps back. Bang, 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 bang. He was so furious. He was saying something. This is bullshit and sannyas birthday, blah, 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 blah. And he was right on me. And I'm stepping back, 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 4 steps to the time where I hit something. My foot hit something. There was a little edge of that pond. Okay, if I would have not seen back, I would have fallen inside the pond. But it was my back, I couldn't see. But clearly, Yog Pratap could see, and that was his intention. Okay, that was his intention to, that was kind of an attacking thing. I'm a woman. Okay, he's a man. Though he's an old man, he do not have any authority to walk over a woman. No, that's a crime. That's too much of an aggression. He needs to do something with his aggression. He's not a trustee. They are caretaker over there. And how come he has the right to, he said to me, get out. Get out now. I want to see you outside the gate. I want to see you on the road. Out. Get out. I said, first thing, when he came right close to me, when I saw there is a pond and I could have fallen inside the pond, I looked at him and he comes this close to me and he says, there was water behind you. And I was trying to tell you that. Well, you don't tell that when coming so very close, when you have pushed me 4 steps back. What was his intention, Raghav? What was his intention? And why being so abusive? Why being so abusive? Get out. Get out. I want to see you on the road. I want to see you outside of the gate. Then I said, first thing, Swamiji, just step back. Keep enough distance between you and me. Just step back. I was on him. I told him 3-4 times, just step back. Just step back. And from there, Dhyanish Swami was saying something. He said, yeah, we know what dirty things you write about us on Facebook. What dirty things you write about us. I said, well, there is something truth about it. So when I said that, again Yog Pratap walked over me again. That old man, okay, he walked over me again and said the same thing again.
Get out. I do not want to see you here. So I said, no way, I'm not going to go. I paid for the whole day. I'm not going to go. Today is my sannyas birthday. I'm going to go inside the Pyramid Buddha Hall and I'm going to go for the white robe. So he said, I will pay your money back. This is Yog Pratap. He says, I'll pay your money back. I want you out on the road. You get out of the gate. Okay? You get out of the main gate. So then I said, I don't want your money back. What I want is just to go inside and attend white robe. Okay, now that your wish is to put this mala inside my robe and then you will be happy, then I can go. So I'm speaking to Dhyanesh now and not to Yog Pratap. So I'm speaking to Dhyanesh saying that, okay, so now I put this mala inside my robe. Today is my sannyas birthday and now I can go inside the Buddha hall, right? And then Dhyanesh says, okay, let her go. He's saying to Yog Pratap. Yog Pratap is still on at me. So again Dhyanesh tells Yog Pratap, let her go. Okay? So I walk very softly, steadily. I walk ahead. I look back to Dhyanesh and I say to him, it's in Hindi, इनकी इतनी उम्र हो गई है यार, समझाओ इनको कुछ. Dhyanesh heard it. Yog Pratap heard it. In English, it is that this man has been, he has gone so old, just tell him few wise things. So, when Dhyanesh heard it, Yog Pratap heard it. So, Yog Pratap asks Dhyanesh, who is she? Who is she? And then Dhyanesh is trying to tell him something which I didn't pay attention to. And I just walked towards the pyramid Buddha hall. So now, further, if you have any question, we can talk about this. Then there is more further once I go inside the Buddha hall also. यस 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 डेफिनेटली एक्चुअली मैंने जो ये पूरा वाकया आपका सुना है, समझा है, तो यहाँ पर साफ नजर आता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें वहां पर चल रही हैं। खास तौर पे जब वहां पर एक जगह पर मुझे कहा जाता है, जब देवेंद्रा के साथ में सुबह मुझे इंट्रोडक्शन मीटिंग जो है मेरे साथ में की जाती है, जो मुझे 20 मिनट के लिए कही गई थी, और नियर अबाउट 45 मिनट, ही टुक माय 45 मिनट, जो मैं अंदर आश्रम के अंदर जो 45 मिनट में बिता सकता था अपने हाँ, उस एनर्जी को फील करने के लिए, वो जी. समय जो है मुझसे देवेंद्रा ने ले लिया, और 20 मिनट की जगह इतना समय, और जबकि मैं ऑलरेडी सारा आश्रम जो है देख चुका था, अदरवाइज वो शायद 1 घंटा मेरा और बर्बाद कर देते। तो एनी हाउ मुझे वहां पर ये समझाया गया कि यहाँ पर आप, हमारा रूल है कि कोई भी किसी से बात नहीं करेगा, सब Strange. अपने प्राइवेट जोन में रहना चाहते हैं, वो आपके लिए भी अच्छा है। मुझे बोला गया कि वो आपके लिए भी अच्छा है कि आप जो है, अगर कोई आपको आकर के परेशान नहीं करेगा, तो हमने यहाँ पर रूल बना रखा है कि कोई किसी के पास जाएगा नहीं। और दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि वो लोग आपके पास में आकर के, जब आपका साइलेंस का बैच लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर आपसे आकर के बात करना, आर्ग्यू करना, ये सब चीजें, एब्यूजिव लैंग्वेज, ये बहुत बहुत शॉकिंग है Raghav, it's हम attack. सबके लिए। It's जी attacking. It's attacking. Okay. If जी there had जी been a man, this guy, this Yog Pratap would have pushed that man. But because I was a woman, he could just step right on my face. 1, 2, 3, 4 steps. And I had to step back to the point where if I would have not been aware a little bit, where मेरे पैर अटक गए एक जगह पे जहां पे इतनी सी रीच थी, उसके पीछे मैं गिर जाती तो I would have fallen. So that's what was his intention. It's clear cut attack. It's clear cut assault. जी क्योंकि अगर आप पानी में गिर जाते हैं, एक तो पानी बहुत गंदा
उसके ऊपर से जो है सर्दी का समय, और उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि फिर शायद आपको वहाँ से घर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। इसके अलावा See, फ्रिज के अंदर आप कुछ that's छोटी भी रख what they सकते हैं। do. That's what they do. They try to terrorize you. They try यस, to terrorize you. This is called threatening to hell. Terrorizing you so very much that you should think twice before going to that place. Even कभी भी कभी भी आप जाने से पहले आप थरकाप जाओ अंदर से कि नहीं यार, ये तो इतनी बदसलूकी से पेश आए हैं आपसे। जबकि अगर योग प्रताप ने ये कम्यून के बाहर किया होता किसी भी औरत के साथ, इतना अग्रेसिव, इतना अटैकिंग असॉल्ट, तो उसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करती, जरूर करती। क्योंकि वो अकेला नहीं था, उसके साथ ध्यानेश स्वामी भी थे। तो यहां से ध्यानेश स्वामी बोल रहे हैं, यहां से योग प्रताप मुझ पे अटैक कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात राघव, जो बाकी 33 लोग थे ना, दे वर लाइक पुअर शिप, गरीब बिचारी भेड़ बकरियां, जो सब देख रहे थे कि एक औरत पे एक बूढ़ा इंसान इतने अग्रेसिवली अटैकिंग वे में बात कर रहा है जोर से, यहां तक कि वो औरत गिर सकती है पानी में, यहां तक उसको पीछे ढकेल ढकेल रहा है। वहां से ध्यानेश बात कर रहा है। एक औरत को नहीं लगा, एक मर्द को नहीं लगा, किसी को नहीं लगा। ये कौन से ध्यान की आंख है इनकी? ये कौन से ध्यान की आंख है? ये वाली आंख के बारे में ओशो बताते हैं हमें। ये आंख है कि बस ऐसे हो रहा है यार आंखों के सामने तुम्हारे, और सिंपल बात है, मेरे सदगुरु की माला है, ये मैं क्यों नहीं पहन सकती? ये मेरे ओशो समाधि की जगह है, ये ओशो पोडियम है, ये ओशो कम्यून है हमारा। और ट्रस्टीज तुम लोग, यू आर जस्ट केयर टेकर्स ओवर देयर। ये आपके 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 पुरखों की जायदाद नहीं है। ये आपके पूज्य पिताजी और पूज्य माताजी की जायदाद नहीं है। योग प्रताप आप सुनिए, जब आप कम्यून में आए तब आपके पास कितने पैसे थे और कितनी प्रॉपर्टी थी, इसका जरा बैंक बैलेंस दिखाइएगा। एंड सेम विथ एवरीबडी हु इज इनसाइड। जरा दिखाइए आप कि जब आप आए थे कम्यून तब आपके पास क्या था, और इतने सालों में आपने कितनी प्रॉपर्टीज कमाई है, खुद के नाम पे नहीं। वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, इनकी गर्लफ्रेंड भी इसके लिए इनके साथ रहती है ताकि इनकी गर्लफ्रेंड्स को भी मुफ्त का खाना और मुफ्त का रहना मिलता है कम्यून में, इसके लिए इनकी गर्लफ्रेंड्स इनके साथ रहती है। वरना आप योग प्रताप जी को देखेंगे उनके साथ, सॉरी, हाँ। चलिए मैं चाहूंगा कि इसके आगे भी बात करें, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जो आपके साथ में वारदात हुई, उसके लिए आप चाहें तो आपके पास में कानूनन रास्ता है, आप चाहें तो शिकायत भी कर सकती हैं। स्वामी जी ऐसा है ना, ये जो कम्यून वाले लोग हैं ना, ये जो 16 लोग ट्रस्टीज, सो कॉल्ड जयेश एंड हिज मेन ऑफ गैंग ऑफ जेंटलमैन, ये लोगों ने इतने सालों से लोगों को किस तरह से डरा धमका के रखा है पता है आपको? टेरराइज टैक्टिक्स कहते हैं इसे। ओके, सो इनके टैक्टिक्स यही हैं, केसेस बनते रहो लोगों पर। हाँ, इन पैसा तो है बहुत, जयेश वहां पे सब लोग लेके बैठे हैं वहां पे, रोज उनको एवरीडे दे आर गेटिंग मनी, कॉपीराइट, बुक सेल, ऑनलाइन, what they're using it for is to to just put false cases on people, terrorize them, threaten them, so that nobody should open their mouth. And this is that way they have been doing it, these practices, since last 21 years. मैं आगे बढ़ने से आपको कहना चाहूंगा, उससे पहले रमेश डडवाल जी यहाँ पर कहते हैं कि एफआईआर तो अभी भी की ही जानी चाहिए, क्योंकि जो बदसलूकी आपके साथ में हुई, इसको लेकर के जिन जिन के नाम आपके पास में सूची है, उस सूची के साथ में आपको एफआईआर की जानी चाहिए, ऐसा रमेश डडवाल जी यहाँ पर कहते हैं आपको। ऐसे है स्वामी जी, देखिए
एफआईआर में जाके करूंगी, ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास जो पैसे की ताकत है ना, आज 9 साल हो गए कोरेगांव पार्क में हमारे आश्रम के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। क्यों? क्यों नहीं हो रही? 9 साल, 9 साल एक एफआईआर सिंपल नहीं दर्ज हो रही। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। माँ, एक बार मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, शायद पीछे आपके यहाँ कोई रेडियो बज रहा है, अगर आपके ओके, अधिकार में है तो आप प्लीज उस रेडियो को बंद करवा दीजिए। हाँ जी जी, तो मैं अभी आपसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो बात है खास तौर पे, आप चाहें तो आपके पास में पूरा अधिकार है, और इस पूरे अधिकार का आप इस्तेमाल करते हुए आप ज़रूर ये अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए, बहरहाल ये आपका अपना पर्सनल मामला है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं, वो भी हम आप ही पे छोड़ते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ में हमें समझना चाहिए कि एक स्त्री के साथ में, एक नारी के साथ में यहाँ पर बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों में माँ अमृत साधना के साथ में जो बदसलूकी हुई, उसको लेकर के बहुत विरोध किया गया। और वो भी लेकिन वर्चुअली हुई थी, नहीं नहीं, और वो भी वर्चुअली हुई थी, वो भी जी, जी। वर्चुअली हुई थी। यहाँ तो जबकि फिजिकल ऑफेंस किया गया है, इट्स अ फिजिकल अटैक, इट्स अ जी, फिजिकल बिल्कुल। अटैक। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब फिजिकल अटैक की यहाँ पर बात आती है, तो डबल स्टैंडर्ड क्यों? हाँ, अपने तो लिए बोलने कुछ दीजिए करो उनके। और अभी सामने वाले का जो लोग उस वक्त साधना माँ के पक्ष में बोल रहे थे, आज मैं वही देखना चाहती हूँ कि कम्युन के 16 लोग या उनके जो भी हैं, ये कितने लोग बात करते हैं अभी इनको स्त्री के सम्मान की जो इतनी बड़ी चिंता पड़ी थी, अब देखे कौन क्या बोलता है। यही लोग थे ना जिन्होंने आवाज उठाई थी कि स्त्री को कितना सम्मान दिया है ओशो ने। उसी स्त्री का आप इस तरह से अपमान करते हो। साधना माँ को वर्चुअली किया गया अपमान, तब आपको इतनी पीड़ा हुई, और जब दूसरी कोई माँ है उसको आप फिजिकली असॉल्ट कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, तब कहां गई आपकी सोच अबाउट द विमेन? रिस्पेक्ट कहां गई? जी, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, हम वो भी जानना चाहते हैं। उसके पहले मैं आपकी 2-3 प्यारी-प्यारी सी तस्वीरें हैं, वो और फिर से यहाँ पर साझा करना चाहूँगा, जिसमें आप बहुत मस्त या मस्ती में लग रहे हैं। देखिए, तो दोनों की दोनों तस्वीरें जो हैं आपकी, कितने आप खुश, जब शायद व्हाइट रोब आपने इसके ये बाद में। ये हाँ, इसके बाद गई थी मैं व्हाइट रोब। यस। तो हम जानना चाहेंगे कि फिर इसके बाद में जब व्हाइट रोब में गए आप हाँ वहाँ से, हाँ तो उसके बाद जी। क्या हुआ? तो जब ये हीटेड आर्गुमेंट हुई योग प्रताप और ध्यानेश स्वामी जी के साथ, तो कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, तो ऑफ कोर्स उन्होंने सुनी, और उनके चेहरे एकदम ऐसे हो गए थे कि अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, अरे ये देखो कौन, अरे ये बात कर रही है और ये इतनी आवाज। तो मैं स्टेप्स चढ़ के, जैसे ही मैं जहां पे ऊपर चढ़ के, देर वेर यू देर इज a shoe stand. So I went up there to keep my shoes. People around, the females, the males, sannyasis. So they were just watching. They were like, "Oh, what happened?" Huh? So it was a strange look on everybody's face. I could, of course, understand, and the vibe was so strange, because something that happened down there with Yog Pratap and Danish Swamiji. So even I was little bit like, what is this? Okay, I went inside because I had my mala inside. It didn't got tucked rightly the way it should have, because it was done in so much of a hurry. So okay, the mala was inside. I went inside, and actually, being my sannyas birthday, I really wanted to sit exactly under the pyramid,
I just wanted to sit over there, exactly under the pyramid, and near the screen where you get to see Osho on such big screen, and it's such a joy to see him on such big screen, because in India, in any of the commune, you don't get to see Osho on such big screen. There is Mehsana commune in Gujarat. It's equivalently big commune, but they do not have right to show Osho video on such big screen. So only in Osho commune they have the right to show Osho on a big screen. So yes, it was beautiful. It was joyful to see Osho on such huge big screen. I wanted to sit under the pyramid, but the incidents that happened was little bothering me. So I could just sit near the very entrance of the gate as you enter inside the pyramid Buddha hall. Just near the gate inside, there are chairs kept. Okay, so I just went and sat on the chair just for a minute or so, because then the music started happening. So near the gate there was one lady. I wish if I can see her photograph, I would be able to recognize her. She stays inside, of course. So this old sannyasi, so called. So she was standing near the main gate, and because the music just started, I could hardly rest on the chair, and I started dancing. I said, just forget about this, people. They are all there to spoil your day, and I won't let them spoil my day. Why should I let them spoil my day, who they are? Okay, I'm here for my own self. So I started dancing. I'm dancing like crazy, and this lady, I'll share her photograph next time for sure. So this particular lady is looking at me so fiercefully, इतने गुस्से से आग बबूला होके ऐसी आंखों से वो सन्यासी माँ मेरी तरफ देखे जा रही है, घूरे जा रही है. Continuously she is looking at me, staring at me. I could feel the rage in her eyes, and I like, now what I have done, let me just be, just get lost, let me just be. And she's continuously staring at me. So I was like, just chuck it. I'm just going to dance and celebrate. I danced and danced and danced. I made sure that I dance and dance and dance. And then when the first bang happened, okay, I was like, okay, now I sit down. I looked to my mala, and what I found was this mala it popped up. I don't know when, and it was outside, and then I realized, okay, this was the reason that old sannyasi ma was giving me such dirty look. इतने गुस्से से आग बबूला होके वो मुझे देख रही थी. वो मुझे तब बाद में पता चला कि वो इसलिए देख रही थी क्योंकि मेरी सन्यास माला नाचते नाचते बाहर आ गई और उसे वो पसंद नहीं आया, तो इसलिए वो मुझे बहुत गुस्से से देखे जा रही थी. बट इन द एंड आई फेल्ट, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई. मैंने कहा, अरे वाह, क्या बात है, हो गया काम अपना तो. And then I sat there, but I could sit inside just for 20 minutes or so, क्योंकि ये इन्होंने ना राघव स्वामी जी पूरे कम्यून में और पिरामिड वाले बुद्धा हॉल में ना जो रूल्स बना रखे हैं ना, वो इतने स्ट्रिक्ट है ना कि आपको सांस लेने में भी आपको ऐसा लगता है, बाप रे, आवाज तो नहीं आएगी, खांसी तो नहीं छूटेगी. और ये मेरा प्रॉब्लम पिछले जब से ये नया बुद्धा हॉल हुआ और मैं पहले 2-3 बार गई, तब मुझे गलती से खांसी आ गई. और जिस तरह से वो लोगों को बाहर निकालते हैं ना अपमान करके, तो ये ऐसे करते हैं अंदर कि आप पिरामिड वाले बुद्धा हॉल में हो, आप थोड़ा सा ऐसे हुआ तो वो आपके तुरंत, उनके वहां पे पंटर लोग बैठे होते हैं, तो तुरंत देखते हैं कि अच्छा यहां से इस कोने से खांसी की आवाज आई. वो ऐसे रेंगते रेंगते अंधेरे में जाते हैं और उस आदमी को टच करते हैं और कहते हैं, यू आर आउट.
वाओ, क्या काम करते हैं यार, मतलब यू आर आउट। सो ये जब से मेरे साथ पहले दिनों में हुआ, तब से साइकोसोमैटिकली ये मेरा पैटर्न बन गया। मैं जब भी पिरामिड वाले बुद्धा हॉल में मैं जब भी जाती, तब अराउंड 15-20 मिनट्स अपने आप मेरे गले से खराश होने लगती है। मुझे इतनी जोर की खांसी आ जाती है, मैं ऐसे करके बैठती हूँ, आंखों से पानी झरता है मेरे, लेकिन मुझे खांसना नहीं होता, क्योंकि अदरवाइज वो मुझे बाहर निकाल देंगे। और जबकि आई एम एंजॉइंग ओशो सच बिग, watching him on such big screen so much, so I don't want to, you know, driven out by them. So I just used to keep my hands like this, and the tears are rolling out from my eyes. So then the same thing happened around 15th or 20th minute. The same thing happened, and then I just left. I left because I thought, no, I do not want to disturb anybody. So I just left. I thought, that's my problem. Okay. So as I left, I came out. I came out where the shoe stand is, and there was Yog Pratap, Swamiji, okay, so called. So he is there. He is sitting into the main entrance gate, where there are both the side staircase, and you enter inside, and there is shoe rack, and then you enter inside the pyramid hall. So वो वहाँ पे he is sitting over there. So he walks towards me. Okay. Whereas I have walked out, and I'm going to go out. He has nothing to say to me. Why? Why again to connect with me when he has been so abusive with me? So he again comes back, and because he's looking at me, staring at me, there is nobody, and I'm like, yeah, I felt a little bit coughing, so I came out. So he said, good, go out in the open air. So I'm like, I don't want to speak with this man. I don't want to speak. So I just don't speak to him. I just don't connect to him. And I walk out. And what I see, of course, when you walk out of the pyramid, Buddha hall, you get to see the whole sky and the moon and the beautiful stars. Huh? So I just came out, and what I'm doing is I'm just looking the sky and the star and the moon. And good that that time he didn't disturb me. I stayed there for a minute or so, and then I stepped down. But when I stepped down, Raghav Swamiji, what I got to see is uh, the place where this abuse happened with me, okay, by Yog Pratap, okay, over there, there are two sannyasin females, okay, women sannyasis, two sannyasis, they are there, and they must have been late, because if you are late by even 1 minute or something like that, you are not allowed in Buddha hall, which has been so previously also. So there is this lady, and she's just, bowing down completely, touching her head to that floor where this abuse happened. And I'm like, oh my god! And she's just bowing down to Osho, the pyramid, because she couldn't go in, so she's just touching her forehead over there, and with so much devotion and with so much love, you know. I saw all that, and then um, I stepped out. I stepped out before I could. I stepped. Sorry, I changed my clothes and everything. I came into my normal clothes, and uh, till that time, the white robe was happening still inside. But because I left early, so there was nobody. So I went to the gate, and I asked the Sodexo gate people over there that, okay, I have left early, so will you allow me to now go towards the Samadhi area or towards the podium area, the other side? So she said, yes, yes, you can go. And then I walked the whole road. I walked towards the gate, and then I was told, no, no, I cannot enter inside that area.
till the time the white robe is not over. So I said, okay. I came back again. I said, please, just at least let me go back to the pyramid area again. Don't, make me stand on the road just like that. Let me be in. So they said, yeah, you can come in. You can stay inside the pyramid area. So I stayed there for some time. And then the white robe was over. People were going out. But before I could leave commune, what I wanted to do is, because this kind of an incident happened with me, so I wanted to go to podium, and I just wanted to uh, पोडियम पे जाके बस मुझे माथा टेकना था, थोड़ा रोना था, थोड़ा हंसना था, जो भी गुफ्तगू जाने से पहले करनी थी। सो मैं गई उस तरफ, पोडियम की तरफ गई, माथा टेका मेरा, लेकिन somehow I don't know, somehow I just couldn't be there for long. I had some time over there. It was beautiful moon up in the sky, the bamboos, the beautiful moonlight in that Buddha hall, old Buddha hall. The bamboos were waving, the moon was shining bright, the stars were there. It was just, it was just heaven. It was just heaven. I didn't want it to come out, but then it was like, no, I think I just go, because I didn't wanted any additional again, headache, uh, that now these people will again gang up and they'll again try to talk to me. I had my day, enough was enough, and then I left from there. So yes, this was this was what it was. तो ये आपकी पूरी की पूरी जर्नी कल सुबह से लेकर के कल रात तक, जिसमें कुछ खट्टे, कुछ मीठे, अलग-अलग बहुत तरह के आपके एक्सपीरियंसेस यहाँ पर आपने बताए हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो हालात हैं, आपने अभी ज़िक्र किया खाँसी को लेकर के, तो मुझे अच्छे से याद आ गया कि मैं जब उसमें पिरामिड हॉल में जब मैं मेडिटेशन के लिए एंटर होने लगा, तो उसके पहले भी मुझे भी ये समझाया गया था, माँ अमृत साधना के ज़रिए, कि आपको जो है ये आप एक टॉफ़ी उन्होंने मुझे दी थी, उन्होंने बोला 2-3 शायद टॉफ़ियाँ दी थी, उन्होंने बोला कि आप ये रख लीजिए, इसको जो है मुँह में रखिएगा ताकि आपको खाँसी ना हो सके। तो हाँ, ऐसा ही रहा। एक 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 महत्व की बात बस उसमें छूट गई। जब ये इंसिडेंट हो रहा था योग प्रताप स्वामी जी और ध्यानेश स्वामी जी के साथ, तब ध्यानेश स्वामी जी ने ये भी कहा माला को लेके कि व्हाई यू नीड टू एग्जिबिट इट, wearing it outside, why you are exhibiting your mala the whole day? And I said, it is not exhibiting. If a married woman who has her मंगल सूत्र, मैंने ये कहा नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कहती हूँ कि of course I'll say this, if a married woman has her मंगल सूत्र out, nobody will dare to ask her that you are not supposed to wear your mangal sutra out, put it inside, hide it. So what is the intention behind hiding it? If anybody says to a married woman, of course she will slap the man, whoever is telling her off to keep her mangal sutra inside. So this is my mangal sutra. ये है, हाँ हो गई है हमारी ओशो से सगाई हो गई, हम है मीरा, ओशो की मीरा है, ये मंगलसूत्र है मेरा। सो उनके लिए ऐसा है, फॉर देम इट इज लाइक व्हाई यू वर एग्जिबिटिंग इट, दिस इज द वर्ड एग्जिबिशन। wearing osho mala out is an exhibition, and not to wear in commune, then where I will be wearing this, not in osho's commune. Yeah. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया माँ, आपने कल के पूरे वृतांत को यहाँ पर सुनाया, बताया कि क्या-क्या आपके साथ में हुआ, कौन-कौन सी घटनाएँ घटित हुई, कितना हर्षोल्लास में आप थे और फिर अचानक आपके साथ में किस तरह से
अटैक किया गया, अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। बहुत सारी ऐसे आपके साथ में ऐसी घटनाएँ हुई, जिसके लिए यहाँ पर बार-बार सन्यासी ने आपके लिए लिखा है कि आप चाहें तो इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं और अगर वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप इस चीज़ पर कैसे करना चाहती हैं, लेकिन ख़ैर वो आपका बिल्कुल निजी मामला नहीं, है, आप जैसा भी ऐसा सोच है, ऐसा है राघव स्वामी जी कि देखिए, करने को मैं तो करूं, लेकिन देर शुड बी समबडी विथ मी. We need to unite. For how long we are going to just take this bullshit from such people who say कि sannyas is bullshit, wearing sannyas mala is bullshit. So when we are going to unite and when we are going to speak about it, not only me, why only me? Why should just I go? Everybody come together. For how long we are going to, just be quiet lambs? Just remember how it used to be at Osho's time. Even Osho's mother used to say that this is the place, you just laugh, you enjoy, you dance, you sing. A joyful place, not a place under terror. It's not a place that you have to be under terror. Oh my God, if the mala is out. Oh my God, what if I go and speak to somebody? Oh my God. So, why they are making this place in such negative manner? Because they do not want us. Because they do not want us. They want to close down the space. That's very clear. That's why they're keeping the basho so dirty. That's why they are not taking care of the podium. They have money to pay to Sodexo. Why not our sannyasi come inside and take care and clean the place, the whole ashram? We are ready to come inside. See, beforehand, kuch saal pehle, few years back, there used to be work meditation for Osho sannyasis, and Sodexo and other companies were not allowed inside because it was a place by Osho people for Osho people. So, loving, joyful energy, doing work with that energy. So, why not allowing Osho sannyasis to come and take care of the ashram? Let us in. We'll clean the podium. We'll clean the basho. We'll take care of the place. If you cannot, then at least be joyful, at least be, little compassionate, little respectful. These people are enjoying the space since last 30 years for free, food and stay, and that too in Buddha field for free. And is this called a trustee? A trustee is mere caretaker, and they're trying to be the owner. What kind of place is this? So I really request to everybody, please come forward. Please come forward. Please unite. This is our master's place. Yes. Osho, Osho, Osho. जी, बिल्कुल आपने सही कहा माँ कि हम बहुत समय से कहते आ रहे हैं, बार-बार मैं अपने चैनल के माध्यम से हमारे सभी सन्यासियों के जो हिंदुस्तान में हैं, जो हिंदुस्तान से बाहर हैं, पूरे वर्ल्ड के सन्यासियों से मैं कहना चाहता हूँ, लेट्स यूनाइट टुगेदर। तो हम इसको लेकर के आगे भी चर्चा करेंगे और बहुत-बहुत शुक्रिया आपने आज पूरी बातों को अपने रखा है। तो मुझे लगता है कि कम से कम आपसे प्रेरणा लेते हुए सभी सन्यासियों को और आगे आना चाहिए। और मैं आखिर में चलने से पहले ये कहना चाहूँगा हमारे टीएनसी लाइव के इस तमाम दर्शकों को जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो हमारे टीएनसी लाइव परिवार का जो हिस्सा है, मैं उनसे एक बारी फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम आपको पसंद आता है, उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ-साथ में यहाँ पर बार-बार हम इस बात को उठा रहे हैं कि किस तरह से आश्रम में क्या चल रहा है, इसको लेकर के आगे भी और आपको खबरें मिलती रहेंगी, बताते रहेंगे। तो मैं माँ आनंद मधु आपका बेहद दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और आपके फिर से एक बारी आपके जो कल संन्यास बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएँ दूँगा और यूँ कहूँगा कि हम सब लोग मिल कर के एक-दूसरे के साथ में एकजुट हो कर के आगे बढ़ कर के इन सब चीज़ों का मिल-जुल करके सामना करेंगे एक-दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके।
बने रहे हमारे साथ में, अगले 8:30 बजे के प्रोग्राम के लिए ज़रूर आएँ, जो आज हमारा बेहद ख़ास प्रोग्राम है। भगवान श्री रजनीश की दुनिया में इस हफ़्ते जी माँ कुछ और कहना चाहते हैं आप शायद? हाँ, बस एक लाइन है ये सारे जो लोग हैं अंदर, योग प्रताप, ध्यानेश स्वामी, सबके लिए कि एक बहुत सुंदर गाना है, लेट द वे ऑफ द हार्ट शाइन थ्रू। थोड़ा दिल से सोचे, थोड़े भक्ति से सोचे, थोड़ा प्यार से बात करे, थोड़ा प्रेम पूर्ण रहे। हमारे ओशो ने बस यही तो सिखाया है, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। इस जगह को इस तरह से आप बस हसीबा खेलीबा धरीबा जी, ध्यानम। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया माँ, प्रणाम आप सभी लोगों को।